On the table, Shri Kaushal Kishore. महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 2 का पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। श्री अजय भट्ट। माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 2 ख पर मेरे नाम के सम्मुख अंकित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। Messages from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha, at its sitting held on 21st July 23, adopted the following 3 motions recommending to the Rajya Sabha that 1. Rajya Sabha do agree to nominate 1 member of Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts of the House for the unexpired portion of the term of the committee, Vice Shri Sukhendu Shekhar Ray, retiring from Rajya Sabha on 18th August 23, and do communicate to Lok Sabha the name of the member so nominated by the Rajya Sabha. 2. Rajya Sabha do agree to elect 10 members from amongst the members of the Rajya Sabha to associate with the Committee on Welfare of other backward classes for the term of 1 year, beginning from the date of the first sitting of the committee, and do communicate to Lok Sabha the names of members so elected to the committee. And 3. Rajya Sabha do elect 2 members of Rajya Sabha in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote to the Joint Committee on Offices of Profit in the vacancy caused by passing away of Shri Hardwar Dubey with effect from 26th June 23, and to be caused by the retirement of Ms. Dola Sen with effect from 18th August 23 from Rajya Sabha respectively, and do communicate to Lok Sabha the names of members so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee. One second. Reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture, Shri Jugal Singh Lokhandwala. धन्यवाद माननीय महोदय। मैं परिवहन, पर्यटन और सांस्कृतिक संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन एक भारतीय विरासत एवं पुरातत्व जुड़ी सांस्कृतिक धरोहर की कलाकृति और सुरक्षा और पुनः संबंधित 338वां प्रतिवेदन, दूसरा बंदरगाह और संपर्क पर्यटन टर्मिनल सुविधाओं समिति को 338वां प्रतिवेदन और सिफारिश मुक्तियों पर संबंधित 349वां प्रतिवेदन, और तीसरा ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हवाई अड्डों और रक्षा हवाई अड्डों का विकास संबंधित 350वां प्रतिवेदन, चौथा राष्ट्रीय अकादमियों और सांस्कृतिक संस्थाओं संबंधित 351वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी निम्नलिखित प्रतिवेदन सभापति अनुमति से सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। Announcement 1. Honorable members,